हाय गाइस, दिस इज सूरज। वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज आपको इस वीडियो में मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ वीक 8 का एनपीटीएल का जो डेटा माइनिंग का कोर्स है। इस वीक 8 असाइनमेंट 8 में टोटल 10 क्वेश्चंस है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार मैं आपसे बोलना चाहता हूँ यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे फर्दर वीडियोज के लिए। आप में से 90% ऐसे लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियोज देख रहे हैं, तो यार जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है रेग्रीगेशन यूज्ड इन। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है अपना ए नंबर ऑप्शन, that is predictive data mining. Next question is number 2. The output regression algorithm is usually a. The answer is real variable. Next question is number 3 and the answer of number 3 is option number C, that is output value and target value. Next question is 4 number and the 4 number answer is B number option. Next question is 5th number and the answer of 5th is D number option, that is 0.51. Next question is number 6. This is also in tabular form. 6th number question is option D. Y is equal to 1.01 plus 0.98x. Next question is number 7 number and the answer of number 7 is D number option. Next question is 8. Accuracy of a linear regression module usually has high bias but low variance. Next question is 9 number and the answer of 9 number is number B, that is auto regression. Next question is number 10th and this question is the last question of this assignment and the answer of this question is number B option. Now we are going to submit the answer. Wait for a while it gets submitted. Now you can see here your answers are successfully submitted. तो मिलते हैं किसी नए अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।